जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranithai Gauranithai Jaya Gauranithai Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Radhe Shyam Lalita Vishakha Jayo Radhe Shyam Jaya Shri Gopal Jaya Giridhar Gopal Jaya Shri Gopal Jaya Giridhar Gopal Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Narsimha Dev Jaya Panchatattva Jaya Shad Goswami Jaya Guru Parampara Jaya Guru Parampara Guru Parampara Jaya Guru Parampara Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Swami Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Param Dayalu Srila Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Param Dayalu Srila Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol
हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, निताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। Hare Krishna. So welcome all of you. Right, Mangalacharan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You all can recite with me. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jaya Mudiraye Nashtapraye Subhavadreshu Nashtaprayeshva Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Nigama Kalpataror Galitam Phalam Sukhamukad Amruta Davya Sammitam Pipada Bhagavatam Rasamalayam Moor or Rasika Bhuvi Bhavuka. Hare Krishna. So welcome once again. Today is from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Shloka number 26. So I will read word by word. Please repeat after me. Mumukshao Gora Rupa Hitva Bhutapatin Atha Narayana Kala Shanta Bhajati Hai Anusuyava. Mumukshavo Ghora Rupa Hitva Bhutan Patin Atha Narayana Kala Shanta Bhajanti He Anusuya. I just wanted to recite by two Prabhus and two Matas. Hari Bol, Hare Krishna. Muksha Gora Rupam Hitva Bhutan Patinatham Narayana Kala Shanta Bhajanti Hi Anusuya. Mumukshavo Gora Rupan Hitvan Muktapatin Atha Narayana Kala Shanta Bhajanti Hi Anusuyavaha. Mumukshavo Ghora Rupan Hitvan Bhutapati Natha Narayana Kala Shanta Bhajanti Hi Anusuyavaha. Thank you, Prabhu's Matas. So, synonymous, word to word meaning we will see. Mumukshava, person desiring liberation. Ghora, horrible, ghostly. Rupan, form like that. Hitva,
rejecting Bhutanpati demigods. Atha, for this reason, Narayana, the personality of Godhead, Kalaha, plenary portions, Shanta, all the blissful, Bhajanti, do worship, he, certainly, Anusuyavaha, non-envious. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Translation. You can repeat also after me. Those who are serious about liberation are certainly non-envious, and they respect all. Yet they reject the horrible and ghastly form of demigod and worship only the all blissful form of Lord Vishnu and his plenary portion. Thank you. So purport is very big. So I am covering the purport. So I just wanted to start. Yeah, Hindi translation, only translation somebody can read. It is okay. जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं. Hare Krishna. Thank you, Mata. You can recite together. We will recite. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmalitam Mena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadankitam Vandeham Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavangsha Shri Rupam Sagrajadam Sagana Ralitam Amsajeevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rashabhanusute Devi Pranamami Hare नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्. ओम तत्सत्. Hare Krishna. First of all, I will pay my obeisances to the deities here in the altar. Also to my Diksha Guru, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, and also my Shiksha Guru. I have many Shiksha Guru, and my dearest Shiksha Guru, His Grace Ramakrishna Prabhuji, and Her Grace Satya Yashoda Mata. And also I will pray all the Vaishnavas assembled here, paying obeisances to you. I will try to recite whatever I have learned from my Shiksha Guru, and hope I pray to Lord that the right word, right time should come. Yeah? And also I am so much blissful and thanks to His Grace Raghunandan Prabhu, Anantrupa Prabhu, Usati Mata and Rajvirasini Mata for giving this great opportunity in the month of Purushottam month. So reciting Bhagavatam in Purushottam month is so great. It has been said in Shastra. So thank you so much Prabhuji for giving me this opportunity. Hari Hari Bol. So we have read basically here say those who are serious about the liberation, certainly they are non-envious. Yeah, it is what mumukshava ghora rupan hitva bhuta patin atha. Yeah, so here the first word, if you see mumukshava, and all these things what I am repeating and just repeating as a puppet, it is all from Prabhupada and Guru Maharaj. They have
recited this particular shloka many times. So everything, all the words which I am trying to repeat is from them. It is nothing from me. But then what you can say, it requires Vaishnava blessing to also recite in a correct way. So the first word here, it is a mumukshava. Prabhupada says it is very difficult to find out this class of men who are in the advanced material society. Yeah. So basically the people who are in advanced material society, they don't know what is mumukshava is. Yeah. Mumukshava means the translation what we have, the word to word translation what we have read, desiring to be liberation. Yeah. But then we have so-called scientists, philosopher, medical experts, like no modern people. I'm not able to hear, Prabhu. I'm not able to hear. Okay. 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 Now I'm able to hear. Okay. Thank you, Prabhu. Okay, I will come little front. Okay. So here I was. Is okay, Prabhu now? No, it's okay, Prabhu. अभी ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु. So I was talking about mumukshava. Mumukshava means desiring for liberation. Yeah. So this material word, it is very difficult to say what is mumukshava. People doesn't know. Yeah. And all the time, is it okay I recite in English? How many of you wanted? हिंदी में बताना पड़ेगा, मतलब हिंदी इतना खास नहीं है और यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड है, उसका ट्रांसलेशन मेरे को हिंदी में मालूम नहीं. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऑल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, कोशिश करूंगा. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सो कॉल्ड जो बिजनेस लीडर है, साइंटिस्ट है एंड फिलोसोफर्स हैं, ये सब लोग जो है, ये लोग सब ऊपर के स्तर में, दे आर सिटिंग ऑन द हाईएस्ट लेवल. दे आर बेसिकली लीडर्स who educate to the people so that people can follow them. So it shows that mumukshava is not easy. Yeah, so many obstructions will come in the life. Yeah, so this is how we have to understand. Yeah, like what technically. In all aspects, so many will have so many difficulties. Yeah. So मैं ये बोल रहा था कि जो भी उन्नत प्लेस पे बैठे हैं, वो लोग को पीपल फॉलो करते हैं, बट फॉलो करने के लिए उनके पास ये आइडिया नहीं है कि मुमुक्षवा मतलब लिबरेशन मतलब क्या है. दिस दे डजंट नो. या in Srimad Bhagavatam 7th canto 5th chapter and 31st shloka, it says, I will read the purport. The person who are strongly entrapped by the conscious of enjoyment of material life and who have therefore accepted as their leaders or the guru, similarly blind men attached to the external sense object, cannot understand that the goal of life is return back home to Godhead. Yeah, and engaged the service into the Lord Vishnu. Yeah. So what is our duty? We have to engage in the service of Lord Vishnu in this material world, also in the आध्यात्मिक जगत में. आध्यात्मिक यहाँ पे भी हमको विष्णु का सेवा करना चाहिए और आध्यात्मिक जगत जाने के बाद भगवान कृष्ण नारायण का सेवा हमको करना चाहिए. इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास. दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. ये हमारा आध्यात्मिक जो क्वालिटी है ये है. हमको दास बनना है. बट हम क्या सोचते हैं, दास नहीं बनना है, हमको मास्टर बनना है. दिस इज व्हाट आवर इंटेंशन इज. सो दिस इज हाउ इट हैज बीन सेड दैट people who are highest level, they don't say what purpose human life is meant for. So it has been said in Prabhupada lecture, one of his lecture, Prabhupada said that in 1950 or 51 he has been invited. At that time he was not a sannyasi. He was invited by his one of friend. उनको एक उनका friend था, उनका नाम था गौरदास. गुरुदास.
गुरुदास उनका नाम था. This Gurudas has asked Prabhupada to come to झांसी, झांसी में बुलाया था. और इंटेंशन क्या था? तभी सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन हम बोलते हैं गांधी, या उसका डिसअपियरेंस, ही हैज पास्ड अवे, या तो उसका पहला सालगिरह था. So all of these leaders, like from that Jhansi, they have gathered at Gurudas' house, yeah. And then it was very surprise for Prabhupada that after they gathered, they little bit planned what has happened. तो उनको बोला गया कि आप एक काम करो, गांधी जी किस पे ज्यादा फोकस करते थे? अहिंसा पे, या अहिंसा मीन्स आप एक थप्पड़ को मारो और दूसरा थप्पड़ आपको देना चाहिए. दिस वाज द गांधीज फिलोसफी, या. तो इसके लिए प्रभुपाद जी को बोला, तभी सन्यासी नहीं थे, आप अच्छा बात करते हो, अच्छा ओरेटर हो, so what you do is you speak about non violence, या. तो ऐसा उनको बताया गया. तो surprisingly I was with our group member I was reading Bhagavad Gita. Every day we used to read. So in that I could able to see from the chapter number Bhagavad Gita 13th chapter 8 to 12 shloka, whatever Prabhupada has said there, he has just put that thought also which related to the shloka. He has put it. I will read for you. Yeah. So non-violence is generally taken to meant for not killing. Yeah. ये हमको समझ में आता है कि नॉन वायलेंस मतलब क्या, अहिंसा मतलब क्या है? किसी को मारना नहीं है, किसी का जान नहीं लेना है. दिस इज कॉल्ड अहिंसा. या इसका मतलब क्या है? बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करना है. बट एक्चुअली नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू पुट अदर्स इनटू डिस्ट्रेस. ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी को मानसिक संतुलन उसका खराब नहीं करना चाहिए, इस स्टेज में नहीं डालना चाहिए. People in general are trapped by the ignorance in the material concept of life and they perpetually suffers material pains. जो इंसान है उसको इस तरीके से ट्रैप करके रखा है मटेरियल भौतिक जगत में, तो हमेशा सफरिंग में ही रहता है. मटेरियल का तो त्रास है, उसमें वो रहता है. सो अनलेस वन elevates the people into the spiritual knowledge, one is practicing violence. देखो कितना अच्छा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वायलेंस में से किसी को मारना नहीं है, किसी को अपना जीवन का हेतु जो मोटिव है ये आप नहीं दिखा पाएंगे, that is a violence. Yeah. So we have to consider that the human life is meant for to know Krishna. Yeah. So this is how we have to understand. And then further Prabhupada is telling, so that they may become enlightened and leave material entanglement. या तो ये सुन के वो जो भौतिक जगत का जो एनलाइटमेंट, आध्यात्मिक जगत का एनलाइटमेंट है, वो उनको समझ में आती है. वो क्या करेंगे? भौतिक जगत का एंगेजमेंट धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं. और हम अपने आप में भी देख सकते हैं 15-20 साल पहले जो हम थे और आज हमारे में बहुत सारा फर्क है. या इवन दो दिस कंट्री इज full of attraction, but we are trying to practice Krishna consciousness. Yeah, this is what Prabhupada telling. This is what it's a non-violence. Yeah, तो हमको ये समझना चाहिए. Yeah, and then Prabhupada further explain that if someone have some rights, yeah, and somebody forcing to stop utilize that right, that is a violence. Yeah, किसी को, what is the human life meant for? To attain highest goal, yeah, to attain moksha. Yeah, if someone is stopping, that is a violence. So it means all the leaders, so-called leaders, yeah, so-called politicians who are not teaching the it's mine only, Prabhu, it is mine only. Let it be free. Yeah. So this is see, mumuksha means already there is something which is like coming behind you. So this is why, and the Chaitanya Mahaprabhu says, yeah, he says the Brahmande, he says in Chaitanya Charitamrita Madhya 19.151, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज. Yeah. So the translation I will read for you because I am not Bengali, so my accent may go here and there. But according to their karma, all living entities are wandering through the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary system, and some of them are going to down lower planetary system. Out of many millions wandering, the living entity, one who is very fortunate to get an opportunity to associate with the bona fide spiritual master by the grace of Krishna,
Yeah, by the mercy of both Krishna and spiritual master, such person receives the seed of the creeper of devotional services. Yeah, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो लोगों का करुणा हुआ है. We have having a great bliss of one is no doubt about Lord Krishna, because without his permission nothing is happening. Yeah, and who is the second personality? Is our spiritual master. Yeah, and all the people who follow our spiritual master, like all our Shiksha Guru. So this is how we should blindly accept them. Yeah, if my Shiksha Guru said go in this way, we should go. We should not ask why I should go in this way. Yeah, and then after following whatever he is telling, then I can ask prashna, like no pariprashnena sevaya. It is required, but then we should blindly follow his divine grace Srila Prabhupada and all his like no Acharya Varga. This is what it says. Yeah, and then further it has been mentioned in Chaitanya Charitamrita that Bharat Varsha, yeah, especially in India, yeah, it has been said that it is taking birth in India is not ordinary. हमको जो भारत वर्ष में जन्म मिला है, जन्म तो सब जगह मिलता है, पर भारतवर्ष में कैसे रूप में हमको जन्म मिला है? मनुष्य शरीर के रूप में हमको जन्म मिला है, विच इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस. या सो क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में वी डोंट हैव टू टीच हु इज कृष्ण. या वी नो इट. Forget about Bharatvarsha. In this country, it's a Gulf country. Here also, our group, we celebrate very elaborate way of Janmashtami. Yeah, we have gathered almost more than 1,000 people every year. Last year we did in a bigger way. Yeah? So it is not required to teach us, not us, and also the 1,000 member. We don't have 1,000 member in our group, but then we went for Kartik month to house. All of them have come. Yeah, with the faith and with the dedication. So we don't have to teach them who is Krishna. Yeah, so this is how we should think that what you can say, Krishna following with the Krishna's mercy taking birth in India is very very auspicious. Yeah, and then you see Prabhupada, how he was crystal clear on the non-violence. Yeah, Prabhupada went to Vrindavan and he did austerity for more than 5 years, dedicated austerity after he took a sannyasa. And what he demonstrated, he basically went on the order of his guru to the outside India, and he encirculated many times. Yeah, and he has established a Krishna consciousness. Also, I heard from the Acharya, when Prabhupada established this ये जो Prabhupada ने जो Krishna conscious movement शुरू किया, beginning time में, मतलब बहुत सारे मंदिर बन रहे थे, बनने का स्टेज में थे. तो ही वॉज वन पर्टिकुलर टाइम ही वॉज इन यूके, लंदन में थे वो. लंदन में बहुत अच्छा टेम्पल है, राधा लंडनेश्वर, ब्यूटीफुल टेम्पल है. तो वहाँ पे प्रभुपाद जी थे, कंस्ट्रक्शन हो रहा था. Suddenly Prabhupada got ill because the climate is also very difficult. So Prabhupada has got ill, and then what he said, because he was knowing that if one person leave his life in Vrindavan, it is very auspicious. Yeah, so Prabhupada immediately made his desire to his disciple, तो मेरे को वापस वृंदावन लेके जाओ. तो उन्होंने immediately arrangement किया, and they bring Prabhupada, which they were not wanted because it's a movement का starting था. अगर प्रभुपाद जी चले जाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा सबके मन में था. One spiritual master required, yeah, but then Prabhupada desired, they cannot overrule, so they immediately arrangement और लेके आए. प्रभुपाद को 100% था कि मेरा भी समय हो गया है, yeah? क्योंकि वो 70 साल के थे. तो उन्होंने सोचा कि अभी जो हमने शुरू किया है, कोई ना कोई इसको लीड करेगा, ऐसा करके वो वृंदावन आए. Yeah, but then Krishna has different plan. What Krishna did, basically Krishna he came back to Vrindavan and he has started taking Ayurvedic medicine because he was very adamant. हम लोग कुछ हुआ तो immediately हम लोग कुछ भी लेते हैं, और वो कैसे बनता है हम इंक्वायर नहीं करते. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लेना नहीं चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो हम भक्ति कर सकते हैं. But Prabhupada was on the dead platform. He said, I will not take any medicine. And then he started taking Ayurvedic. So Krishna has double load. एक तो उनका लाइफ, मतलब उनका जो देह का स्थिति है वो बहुत कमजोर है, बट कृष्ण ने प्रभुपाद को हाथ नहीं छोड़ा. He has revived. He has again come back into his strong position. And then he has with full force he has gone entire world and spread. So हम यहाँ से सीख सकते हैं कि प्रभुपाद has exactly followed what Chaitanya Mahaprabhu said, that we have to spread Krishna consciousness. So
But unfortunately, in this modern society, we are dragging people on the materialistic side. We are not taking contribution of these great sages, rishis, like Prabhupada, become successful in our human life, and but by force we are dragging them into the materialistic attraction, and Prabhupada says this is violence, ये जो है इसको अहिंसा, सॉरी हिंसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंसा। ये हमको अगर हिंसात्मक नहीं रहना है तो हमको क्या करना है, कृष्ण कॉन्शियस हमको करना है। खाली करना ही नहीं है, वी हैव टू आल्सो प्रोपेगेट। सो नरोत्तम दास ठाकुर संग, हरि हरि बीफले जन्म गो नहीं नो, मानुष्य जन्म पाइला राधा कृष्ण ना भजिया, जनिया सुनिया बिश कोइना। I think Bengali people have understand my way of talking, but we will read the translation. My dear Krishna, I have simply wasted my life without Krishna consciousness. Such opportunities of human life, our attention has diverted simply by eating, sleeping, mating, and defending. And our real human goal is spoiled. इसका मतलब ये बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो अपना जीवन को वो स्पॉइल कर रहा है, अपना जीवन को वो खराब कर रहा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस, एंड एग्जैक्टली दिस हैज आल्सो मेंशन्ड इन हितोपदेश 25, आहार निद्र भयमैथुनं च सामान्य एत पशुभि नराणाम, धर्मो हितेशम अधिक विशेषो धर्मेन हीन पशुभि समान। The person who is not taking Krishna consciousness, what is his level? उसका लेवल क्या है? उसका लेवल पशु का लेवल है, क्योंकि वो चार काम पशु भी करता है, चार काम हम भी करते हैं। I will not go into read the translation. So this is how we have to understand that we should be human. Human life जो है बहुत important है, और exactly ये जो human life के लिए और जहाँ पे हम लोग हमारा जीवन गुजार कर रहे हैं सोच के कि हम बहुत अच्छे हैं, दुबई में है वगैरह वगैरह, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता 8वां चैप्टर 15 श्लोक में, माम उपेते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमं गति। The translation: after attaining me, the great soul who are the yogis and devotion never return to this temporary world, which is full of misery, because they have attained the highest perfection. So भगवान अश्योरिटी के साथ स्टैम्प पेपर लेके उसमें स्टैम्प मार के साइन करके को क्या बोलते हैं कि पर्सन हु इज अटेनिंग मी ही विल नेवर कम बैक। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि ये दुनिया कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे पूरा दुख से भरा है। हमको लगता है सुख है, बट कोई सुख नहीं है यहाँ पे। एक थोड़ा सा सुख मिलेगा, उसके बाद दुख जरूर आएगा ही आएगा। और दूसरा क्या है, अशाश्वतम, इट इज टेम्पररी। हम सब चीज में सब चीज में हम लोग परमानेंसी ढूंढते हैं। सब में हमको परमानेंट घर चाहिए, परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट वाइफ चाहिए, परमानेंट चिल्ड्रन चाहिए, पर सभी परमानेंट चाहिए, बट हम खुद परमानेंट नहीं है। वी आर टेम्पररी। क्यों टेम्पररी है? क्योंकि जैसे ही हमने जन्म लिया है, मरना जरूरी है। सो दिस इज, एंड फर्दर लॉर्ड सेज इन 13.9, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु चरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भगवान क्या बोलते हैं, ये जो दुनिया है, इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी ने नॉन वायलेंस का जो परपोर्ट जो मैंने पढ़ा वो डाला है ना, क्योंकि ये जन्म मृत्यु चरा व्याधि और क्या है, दुख दोषानुदर्शन। यहाँ पे हमारे पास फॉल्स ईगो है, बहुत सारा चीज है, ये डिसीज है। लॉर्ड बोलते हैं दिस इज अ डिसीज, सो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। सो मनुष्य जन्म, ह्यूमन फॉर्म स्पेशली मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कृष्ण। और वो कौन से कृष्ण है? राधा कृष्ण। इसके लिए गौड़ीय परंपरा में ऐसा बताया गया है, द हाईएस्ट वर्शिप इन गौड़ीय परंपरा इज राधा कृष्ण वर्शिप। हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु हमको अलाउ नहीं करते हैं राधा कृष्ण डीटी घर में लाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए।
अगर हम उस तरीके से या हम उसका सेवा कर सकते हैं तभी लाना चाहिए। तो हमको क्या हमारे शिक्षा गुरु होते बोलते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई को लेके आओ। लड्डू गोपाल जी वो आते ही है माता लोगों के साथ। और दूसरा क्या है, गौर सुंदर गौर चंद्र और निताई चंद्र, यहाँ इनको लेके आए क्योंकि ये बहुत मर्सीफुल है। इनका सेवा करते 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 वी विल रीच टू द लेवल ऑफ राधा कृष्ण सेवा। यहाँ तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हमारा शिक्षा गुरु बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितने भी भक्त वर्ग हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वी शुड रीच टू द लेवल ऑफ ब्राह्मणेटिकल इनिशिएशन। So that is the minimum standard in ISKCON, that person who is having Brahmanical initiation, he is only allowed to do worship in the temple. Yeah, but then so-called materialistic क्या करते हैं, what they do basically they don't like Radha Krishna, yeah, because it is not giving some kind of like क्या बोलते हैं आपको उतावला होने का, या you will not get excitement, yeah, with Radha Krishna. What you will get excitement, they said that the Kurukshetra Krishna, he is very good, Vasudeva. Why? Because he has played many roles there, yeah, so many political role he has played. Whatever he has done, that was a dharma, yeah. He killed many people, yeah, who are on the adharma side, he killed them, yeah. So people, the politicians, so-called politicians, they love, so-called politician means the good politicians. They love the Krishna in a battlefield, yeah. So this is a Prabhupada said, no problem, that is also accepted, yeah. So Prabhupada said, for that Krishna, Prabhupada said Arjun Krishna, yeah. See, very nicely, there is a Radha Krishna and Prabhupada is telling Arjun Krishna. This is how whenever we take Bhagavad Gita, in that Bhagavad Gita, two personality we can see on the front page, Yatharupa. एक कौन है, भगवान कृष्ण, स्वयं कृष्ण। और भगवान कृष्ण कौन से लेवल पे है, नीचे के लेवल पे, और ऊपर के लेवल पे कौन है, अर्जुन है, yeah. So what this displays, that if you are joined to your yatra, to your great society or to Krishna, कृष्ण जो है अपने आप को नीचे करते हैं और अपना भक्त को ऊपर करते हैं। This is the message we can see in Bhagavad Gita first page, yeah. So this is how what that Arjun Krishna is telling to Krishna, to Arjuna, that मनमना मोमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि मे, या क्या बोलते हैं, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर homage unto me, yeah, thus you will come to me without fail. I promise you, because you are my dear friend. This is once again Lord is confirming with on the stamp paper that you are going to come to me. There is no doubt about it, yeah. And then further Lord is telling, which is very very important, and every in the class it has been recited, sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papyabhyo mokshayishyami ma shucha, yeah. Abundant varieties of religion, this is what it is telling. Ghora Rupan, yeah, we have to abandon all kind of rituals what we follow, yeah, we have to abandon. The meaning of that shloka is, yeah, and then surrender unto me, yeah, we have to surrender completely, yeah. And then Lord is assuring that I will deliver from all sinful action, not only in this janma, yeah, many janmas what we did we don't know, Krishna only knows, yeah. So he said he will take it off, yeah. So actually the whole world is spoiled. This is what Prabhupada is telling, and Prabhupada has tried to draw the attention of the people who are thoughtful men, yeah, जिनका इंक्लिनेशन है भगवान की तरफ। प्रभुपाद जी ने सबको अट्रैक्शन किया, सबको क्या, हमारे जो गुरु महाराज है हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज इज अमेरिकन बॉडी, या, he has been attracted so much to Prabhupada, so he has surrendered his passport, American passport। वो टाइम में कोई सरेंडर नहीं करता था, सब लोग को अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए था, 1970 में, बट वेरी जॉयफुली जयपताका स्वामी महाराज surrendered that passport and had Indian passport, yeah. So taking Janma in India, we can understand how fortunate we are, yeah. So this is how we have to understand, yeah? And then यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा मतलब वी बिकम लिबरेटेड, या, इसको बोलते हैं मुमुक्षुः। सो यू सी द सो कॉल्ड लीडर, they don't know, why they don't know about mukti or moksha, because they think themselves is this body, yeah, yeah. And then हम
मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जैसे हम बहरीन में बलराम देश में इस्कॉन में आए तो फर्स्ट वर्ड सुन के थोड़ा सा अचंभित हो गए। उन्होंने क्या बोला, आप नहीं हो, क्या बात कर रहे हो, आप नहीं हो, क्या हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर soul. Yeah? So this is how whoever is coming to the ISKCON, what we teach them science of self-realization. This is very, very important. We should understand that we are not this body, this life. Because of Krishna's mercy, because of Guru's mercy, we have taken birth and we are in Krishna consciousness. Next life, if we don't do Krishna consciousness, we don't know where we will go. Yeah? तो हमको ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। एंड देन उसके बाद में हमारा जो our basically faith will get firm. या तो जो सोल के बारे में है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं, तो this was probably like in 70s or 80s. Yeah, America was getting like they were about to visit, about to go to moon, and many things was happening. Yeah, so at that time they said to the government, उनका proposal था कि we have invented the high resolution camera which is better than the telescope. ऐसे बोलते हैं, ऐसा हमारे पास प्लान है, ऐसे बोलते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया उसमें, वो प्रोजेक्ट में, और उनका मोटिव क्या था, दे वांटेड टू सी द सोल। उनको मालूम पड़ा कि कोई मरता है तो कुछ तो चीज जाता है, इसके लिए कॉन्शियसनेस रहता है। सो दे वांटेड टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन द सोल। तो उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल में जाके वो जो कैमरा है वो लगाया। देखिए सिचुएशन कैसा है, एक आदमी बिस्तर पे लेटा है और वो जन्म और मृत्यु और जीवन के बीच में वो he is like a very difficult situation, and these scientists wanted to see how he is dying. Yeah, very अच्छी तरह से उन्होंने फोकस किया, and then that person died. After that person died, they were continuously monitoring. कुछ आया नहीं कैमरा में. It was a high resolution camera as per them. Yeah, but अभी गवर्नमेंट को जाके बोलेगा तो ट्रम्प जैसा आदमी रहेगा तो उसको जो उसका सर है वो धड़ से अलग कर देगा। तो what they did, they made some white kind of like image. तो बोला हमको दिखा, और सबने मान लिया उसको। या बट वेरएज भगवत गीता में ये बताया गया है कि हमारा सोल का साइज क्या है, या और उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया या एक छोटा सा वायरस है, you can find soul in that also. You cannot see that even in a microscope. या उसमें है, और बड़ा सा जीव कौन सा है, हाथी है, उसमें भी वो सोल है। या तो देखिए भगवान का साइंस कितना बड़ा है। या और ये सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक कैसे हमको मूड बनाते हैं, कैसे हमको बोलते हैं कि हम वी आर एलिवेटेड, वी हैव गॉट एवरीथिंग like that they are telling it. So we have to understand. So the politician education is what? The liberation means supremacy. Yeah, we have to, I don't wanted to say much about it. We are seeing it here, what is happening in this region now. Yeah, everybody wanted supremacy. सबको चाहिए क्या, प्रभुत्व। दिस इज द राइट वर्ड। प्रभुत्व, एक के ऊपर रूल करना सबको अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं हमारे इंडिया में, क्या बोलते हैं, व्हाट इज लिबरेशन इन इंडिया? ब्रिटिश हमको छोड़ के गए तो हम लिबरेट हो गए। दिस इज व्हाट people are thinking, that we are liberated. What liberation you have? Yeah? It is good that we have one good prime minister now, so at least the Sanatana path has little bit reviving. Otherwise there was no good thing after liberation. Yeah? तो ये हमको समझना चाहिए। yeah? तो महाप्रभु बोलते हैं अपना चैतन्य चरितामृत आदि 9.41 में, भारत भूमि हैला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकारा। व्हाट महाप्रभु से, तो जन्म हम कैसे सार्थक कर सकते हैं? हम भारतवर्ष में हमको जन्म मिलने के बाद हमको दूसरे को जाके जो मुमुक्षा है, जो लिबरेशन है, इसके बारे में भूलना चाहिए। वी हैव टू टेल Krishna's message so that the people get benefit out of it. And not only that, because of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, we are sitting in a place called Gulf. Yeah, here it is now little bit liberated, but आप 15 साल या 10-15 साल पहले देखेंगे तो it was very difficult. Yeah, when we bring something obscenity, we used to hide and bring. Yeah, कोई प्लेन में उतरने के बाद कस्टम वाला खींच ना ले, स्कैन करके ले, तो those all things was happening. Yeah, so this is how we have to understand that how fortunate we are. Yeah, and अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के कृष्ण को, His Divine Grace Srila Prabhupada के मर्सी से we are doing Krishna consciousness. Yeah, here sitting in this country, and we got Krishna consciousness. Yeah, so the interesting thing of the liberation. Yeah, those who wanted to remain within this bondage of material world,
of transmigration of this body, yeah, on this particular sentence or particular shloka, particular subject. Lord is telling in Bhagavad Gita 8.16, a brahma bhuvana loka punar ahavartino arjuna mam upetantu kaunteya punarjanma na vidyate. Yeah, what is the translation? It is from highest planet in this material world down to the lowest, all the places of the misery wherein the repeated birth and death take place. Yeah, but one who attain my abode, O son of Kunti, never take birth again. Yeah? So this is Lord is telling that, like, no, if you attain me, a brahma bhuvanar loka. Yeah, we are wandering. Somebody wanted to do very greatly is the social work. Yeah, constructing hospital, all those things. This is not this is only urging the punya. Yeah, that is no use. Yeah, so what is telling, whoever is attaining Krishna, to attaining him is a mukti, yeah, mumukshava. This is what we have to say. And trying to and what the materialistic scientists are doing, they're trying to improve the material condition. जो comfort level है वो ज़्यादा होना चाहिए. या अगर हम कार में हैं तो हमको स्पोर्ट्स कार चाहिए, स्पोर्ट्स कार में है तो हमको उससे ऊपर वाला चाहिए. या विमान एरोप्लेन है तो हमको सुपरसोनिक एरोप्लेन चाहिए. या हम पहले 4 घंटे में पहुंचते थे, अभी 1 घंटे में पहुंचेंगे. बट वो पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? यूटिलाइज ऑल द सोर्सेस. या जो धरती का सोर्स है, इट बेसिकली बर्न्स हाई फ्यूअल. या उसे रिफाइन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये सब चीज जो है ये इग्नोरेंस है. प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस. मतलब ये, या तो इसके लिए शास्त्र में बताया गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय. या मतलब क्या है? हम जो अंधकार में है हमको प्रकाश की तरफ आना चाहिए. और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि डार्कनेस जो है उसको इग्नोरेंस बोल के कंसिडर किया हुआ है. डार्कनेस इज बेसिकली इग्नोरेंस. इसके लिए बहुत समय रात में बिताना इज नॉट गुड फॉर आध्यात्मिक पर्पस और मटेरियल पर्पस भी, क्योंकि रात में जितने रहेंगे उतना सुबह नहीं उठ पाएंगे. तो जितना सुबह नहीं उठ पाएंगे, ये पुरुषोत्तम मंथ है, बहुत अच्छा मंथ है. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गेट अप एवरी डे ब्रह्म मुहूर्त में, और हमको चैंटिंग करना चाहिए. और हम प्रकाश के साइड में आएंगे. आने का जो है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द मुक्ति. मुक्ति मीन्स वी आर कमिंग फ्रॉम द डार्कर साइड, ignorant side, like, no, which we don't know who is Krishna, and we are coming on the light side, which is a Krishna. Yeah, that is the mukti. This is what Prabhupada is telling. Yeah, so the first 2 sentence, mumukshava gora rupan hitva bhutva patinatha. Yeah, so let us quickly see what is this gora rupan. I know after this class there will be any question come, so I'll try to, like, no, somehow I have great personality here, Raghunandan Prabhu and all other Vaishnavas, we'll try to. So why Lord is telling Ghora Rupan? We'll quickly see what is Ghora Rupan. And this is again what I'm repeating is what Prabhupada said. Yeah, it is not nothing from my side. Yeah, so Prabhupada said, अभी किसी को जाके बोले कि कृष्ण का भजन करो, especially he is talking about, he is giving example of West Bengal, जहाँ से प्रभुपाद जी का बर्थ हुआ था. तो they said, why not Kali? क्यों काली को नहीं हमको भजन करना चाहिए? या सो काली मीन्स घोर रूपान. क्यों? उसका रूप जो है उग्र है. या सो काली इज वेरी एक्टिव. या एंड देन ही सेज दैट इट हैज गॉट लॉन्ग टंग. उसका जीभ जो है काली का लंबा है. या एंड देन ही सेड एंड इट हैज गॉट द सोर्ड. उसके हाथ में तलवार है, सोर्ड है, इन अ हैंड. और उससे क्या करती है? वो सबका जो हेड है चॉप करती जाती है. दिस इज द रूपा ऑफ काली. या सो इट इज वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में. या तो व्हाई नॉट वी वर्शिप काली. या सो शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जो वेद में हमको लगता है कि ये सब चीज वर्शिप लिखा है, क्यों लिखा गया है? या तो प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं क्योंकि जो शास्त्र जो है सभी कम्युनिटी को, या होल कम्युनिटी इट शुड कवर. या पीपल हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लॉर्ड, they have to cover that also, and people who are inclined towards enjoyment, which is meat eating, they have to cover them also. So this is how there are, the Ghora Rupan is not bad, but it is basically covering the people who wanted to enjoy themselves. That this is what Ghora Rupan, this is what Prabhupada is telling. So the lowest person
to the intelligent person. Yeah, because the intelligent person, like who are the intelligent person in the earlier days? Of course, now there is no intelligent person. All are Shudra only. Yeah, but those days, who are the intelligent person? They are called Brahmana. Yeah, the Brahmana category is the intelligent. They will try to be all the time in the mode of goodness. Yeah, and then the other three categories will be either mode of passion or mode of ignorance. Yeah, so this is how we have to cover entire community. This is how the Veda has been structured. Yeah, and Chaitanya Mahaprabhu says in Chaitanya Charitamrita Madhya 21:17, Krishna bhuile se jiva anadi bahirmukh. Yeah, atena maya tare daya samsara dukha. The translation, sorry for my accent for Bengali, the forget Krishna, the living entity, has been attracted by the external feature of time immemorial. Therefore, the illusion energy Maya gives him all kind of misery in this material existence. Yeah. So why we are suffering in this world? Because we have forgotten Krishna. Krishna bhuliye. Bahirmukh means what? We are, Krishna is on this side and we are facing our face on the other side. So this is how we are suffering. This is how, and then exactly this particular thing, what Chaitanya Charitamrita says, or Chaitanya Mahaprabhu is none other than Krishna is saying. It is also there in Srimad Bhagavatam 11.5.11. In this material world, the conditioned soul is always inclined to sex, meat eating and intoxication. Therefore, the religious scripture never actually encourage such activities. Although the spiritual injection provide for the sex through the secret marriage, for the meat eaters through the secret offering, and for the intoxication to accept the rituals of cup of wine. Such ceremony are meant for the ultimate purpose of renunciation. So, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लास के लोग हैं, whichever class you are, it is something is written there so that you have to be little bit restrict yourself. हमको थोड़ा सा renounce होना है, हमको थोड़ा सा follow करना है. तो ये follow करके आगे बढ़ने से क्या होता है? One day you will understand who is Krishna. Yeah. So this is how it says. Yeah. So we can see here every living entity having a tendency that one should regulate himself. Yeah. So regulation. So this is how we follow. What we follow when we take shelter, what we follow? 4 regulative principle. Yeah. This is mandatory. If you wanted to progress yourself in a bhakti, the 4 regulative principles are mandatory. And what another thing is mandatory? Chanting the holy name as Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So this is very much mandatory, yeah, in this material world, so that we don't entangle with so many ghostly things, like so many things which is like it is not that easy that you simply eat goat. Yeah, so it has been this is what Prabhupada said, that on the 4th night, Amavasya day, they have to do all the follow-up, and then they have to, on the night, black night, they have to offer this goat and then they can eat. तो इतना easy नहीं है कि हम ऐसे खा सकते हैं. और यहाँ पे एक कंट्री में हमने सुना है, हम वो लोग भी ऐसे नहीं खाते हैं. यहाँ कहाँ पाश्चात्य देश में जाते हैं तो रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं, क्या देखते हैं वो, कि ये जो मीट है ये हलाला है कि नहीं है. आई शुड नॉट से इट, बट ये देखते हैं और तभी वो ग्रहण करते हैं. या exactly this is halala means what? Sacrificed one. Yeah. So this is how it is there in every religion, that you have to regulate yourself. You should not do it by left and right. Yeah, ऐसा बताया गया है. Yeah. And then so therefore so many prescription of worship are mentioned in demigod worship. Yeah, but Krishna's worship is very simple. Yeah, बहुत simple है कृष्ण worship. क्या करना है? हमको chant holy name chant करना है, सुबह उठना है, और हम कोई भी condition में कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हमको पद्मासन में बैठना है. We have to put our head down and leg up. ऐसा कोई ऐसा बताए. क्यों? कृष्ण हमारे पिता है, परम पिता है, और पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा और या मेरा बेटी मेरे पास आए.
This is his intention. This is how you have to understand. And in Bhagavad Gita, Lord also say in 7.20, those who are intelligent has been stolen by the material desire. Surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation of worshipping according to their own nature. उनका जो नेचर है, इसके लिए वो डेमीगॉड को सरेंडर होते हैं, और सरेंडर होने के बाद कहाँ जाते हैं? आफ्टर दैट डेथ दे गो टू डेमीगॉड प्लैनेट. अगर शनि भगवान का कर रहे तो उनका प्लैनेट में जाएंगे, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, जितने भी देवता है उसके प्लैनेट में जाएंगे. और वो कल्प के बाद जब भी खत्म हो जाएगा, वो लोक भी खत्म हो जाएगा, और उसके साथ हमारा देवता भी खत्म हो जाएगा, और हम भी खत्म हो जाएंगे. Because this is the post selected by the Krishna. This is how we have to understand. So further, if you see, during Krishna's time, he also demonstrated this. किसी को आइडिया है? कभी मैं बोलता हूँ. So नंद महाराज जी जो है वो क्या कर रहे थे? इंद्र का वर्शिप कर रहे थे. क्यों इंद्र का वर्शिप कर रहे थे? क्योंकि बारिश चाहिए. अगर बारिश आएगा तो फल फूल रहेगा, और फल फूल आएगा तो जो गौ माता है, दैट इज द मेन बिजनेस फॉर देम, वो खा के ग्रास होएगा तो वो खाएगी, फिर मिल्क ज्यादा आएगा. दैट वाज देयर लाइवलीहुड. दे कैन नॉट गो आउट ऑफ इट. बट देन वन डे Nand Maharaj was making an arrangement, elaborated arrangement. Krishna come there. He was very small. And Krishna said, you don't do this. You have to, if you wanted to really do, आपको पूजा करना है, गोवर्धन का करो. क्यों? गोवर्धन देता है हमको सब चीज, और बारिश किसी का जागीर नहीं है, वो अपने टाइम में आना ही है. So then what Krishna did, he became Govardhan, and he accepted all the Anior, they were खाली गोकुल में जितने ग्राम है सब लोग ला के देख रहे थे. So this is how we have to understand. Krishna was demonstrated this, that no need of worshipping demigod, but at the same time, which is Prabhupada underlining and telling it, that we should respect. We should respect all the gods, because they have appointed by Lord Krishna. We have 33 crores devata. All the devatas we should respect, and we should go to them, and what we should ask? We should ask Krishna Bhakti. If you ask Krishna Bhakti, they will be jubilant. दुर्गा देवी बहुत खुश हो जाएगी. तो हमको उनसे क्या मांगना चाहिए? कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए. So this is what we should, क्योंकि कृष्ण ने बोला नहीं पूजा करना है. This is some adamant thing is happening like in our society also, but we should come out of it. कोई अगर पूजा कर रहा है तो we should not disturb him. Let him do worship. So that he will come one day to Krishna. We are no way to bring someone to Krishna consciousness. We can try our best so that he is attracted. This is very, very important. Then further, like no, we are falsely identifying us that I am Indian, I am American, I am European. This is the identification, and I say that I have a skyscraper building. बहुत सारे हमने क्या बोलते हैं उन्नति किया है, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है. अमेरिकन जाके आप बोलेंगे तो इज टेलिंग आई एम हैप्पी, आई हैव बिग बैंक बैलेंस, आई हैव अ कंपनी, आई हैव वाइफ, एवरीथिंग इज देयर. व्हाई आई शुड कम टू Krishna consciousness? But if your Prabhupada says, if you don't come, you don't know what is your next life is. Whatever karma you do in this life, accordingly you will get. You have to forcefully get one kind of body. It may be dog, it may be hog, कुछ भी हो सकता है. It's better to take Krishna consciousness rather like going here and there. Because the soul will surely transmigrate from one body to another body till it doesn't reach to mumukshavaha. जब तक मुमुक्षुओं पहुंचेंगे नहीं है, इवन घोरान करके इफ यू आर रीचिंग डेमीगॉड्स प्लैनेट ऑल्सो, स्वर्ग में हम जाएंगे, तो जब तक हमारे पास पुण्य है, क्षीणे पुण्य विषय, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक का विषय. तो जैसे पुण्य क्षीण होता है, वहां से हमको लात से मारेंगे और हम आके फिर से क्लाउड में फंसेंगे या पितृलोक में फंसेंगे. फिर से हमको जन्म लेना है कहाँ पे? यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम. So this is what Prabhupada is telling. The second line जो है इसका, we'll quickly see now. It is नारायणम कला शांति भजन्ते ही अनुसूयवा. यहाँ पे important word क्या है? नारायण भजन्ते is important, but उससे important क्या है? What we should be? We should be अनुसूयवा. अनुसूय मतलब non envious. This is the thing which bring us down. एक तो सूय नहीं होना चाहिए. ऑलवेज वी आर सूय. वो भक्त हमसे ऊपर, हम डिवोटी सर्कल में ये इसको हमको
त्यागना चाहिए. Once we get rid of his, we will be in the platform of spiritual. This is what Prabhupada tell. And then we have so much what you can say, opportunity here, yeah, because Prabhupada left this dharatal, but then he's alive through his books, yeah. His books are himself only, yeah, transcendental books. So we should refer those books, and we should try to be elevate ourselves into the Krishna conscious movement, yeah. And then this is how we can be on the highest level. And then we can also learn from Prabhupada. जब Prabhupada जी ये धरातल में थे, उन्होंने क्या किया, पूरा दुनिया को भ्रमण किया. एंड देन आफ्टर लखनऊ भ्रमण करने के बाद 108 टेम्पल बनाया. हाँ, Prabhupada says these are not temple, these are the spiritual universities, yeah, where it will teach you what is your life, why you have got this human form, yeah. तो 108 Prabhupada जी ने बनाया, और वो Prabhupada जी जाने के बाद भी अभी हजारों में है, yeah. ऐसे बोलते थे कि ब्रिटिश रूल पे कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, देयर इज नो सनसेट ऑन ब्रिटिश रूल. अब हम प्राउड से आज बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी का इस स्पिरिचुअल किंगडम है, इसमें कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई उठ के मंगल आरती कर रहा है, क्योंकि टाइम डिफरेंस ऐसा है कि आप कहाँ पे भी जाओ, हर कंट्री में एक प्रभुपाद जी का इस्कॉन टेम्पल आपको मिलेगा. हाँ, और उससे आपको प्रसादम भी मिलेगा और डिवोटी एसोसिएशन भी मिलेगा. दिस इज हाउ वी शुड सी. एंड देन कृष्ण कॉन्शियस में क्या बोलते हैं, ये जो गॉड कॉन्शियस है, उसके लिए श्रीमद् भागवत में एक प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी, यू हैव गिवन द नेम फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ. व्हाई यू आर राइटिंग कृष्ण भावनामृत, यू डू गॉड कॉन्शियसनेस, या मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्टेड. प्रभुपाद ने बोला नहीं है, या आज मैं गॉड कॉन्शियस रखूंगा, जैसे मैं जाऊंगा एक अपना भगवान को लेके आएगा, दूसरा अपना भगवान को लेके आएगा, या इवन दो दे ब्रिंग इट द प्लैनेटरी पोर्शन ऑफ, और वो पूरा मेस हो जाएगा, या. तो दिस इज हाउ ही वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द भागवतम. इन द भागवतम, श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में ऐसा बताया गया है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, या कृष्णस्तु भगवान स्वयं. दिस इज हाउ वी शुड टेक एज क्रिस्टल क्लियर, या. उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कृष्ण जो है, और हम जब भी हम देखते हैं कोई याग हवन होता है तो जो प्रीस्ट है वो क्या बोलते हैं लास्ट में, कृष्ण अर्पणमस्तु, या जो भी मैं करता हूँ कृष्ण ये तेरे को अर्पण है. तो ऑन दिस अर्पण एंड ऑल्सो द नारायण कला भक्ति, आई विल वेरी क्विकली, वी हैव टाइम नो प्रभु, yeah, 5 minutes I will try to wind up. So those story जो है, I just wanted to say because very important this story is, yeah. This has happened when Chaitanya Mahaprabhu was there, and it has mentioned in Chaitanya Charitamrita Adi 1.17.229, yeah. So I'll just read that. Unwandering devotional, yeah. So it has said that the story highlights the unwandering devotion of Srivas Thakur, who has prioritized Lord Chaitanya's happiness over his sorrow, yeah. यहाँ पे एक छोटा स्टोरी है कि चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास आंगन मतलब चैतन्य महाप्रभु का एक प्लेस है, वहाँ पे वो हमेशा नर्तन करते थे, हमेशा कीर्तन करते थे, या. सो एक दिन शाम को कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन इतने अच्छी तरह से चल रहा था, सब लोग जुबिलेंट में थे, सब नित्यानंद प्रभु सब लोग वहां पे इकट्ठा थे, या. तो उसी समय में श्रीवास ठाकुर का जो बेटा था वो बीमार था, बहुत बीमार था, हाँ. और उस रात जब भी कीर्तन चल रहा था तो जो बेटा था वो उसने अपना देह त्याग दिया, या. जैसे ही श्रीवास ठाकुर को ये मालूम पड़ा, केयरफुल माता, जैसे ही श्रीवास ठाकुर को मालूम पड़ा, श्रीवास ठाकुर ने सब लोगों को दबाया. He said that this news should not come out, yeah, because Mahaprabhu jubilantly he is dancing, yeah. He is completely immersed in the kirtan. तो ये no lamentation, no कोई कैसे कितना कठोर ऐसा किसी को लगता होगा. माँ तो रोएगी, yeah? बाकी कोई भी हो, but then he has restricted everyone not to cry, not to make noise, yeah? और वो but Mahaprabhu, he is none other than Krishna, he understands. तो जैसे संकीर्तन रुका, वो अपने कॉन्शियस में आ गए, तो उनको लगा कि he said that कुछ अच्छा नहीं हो रहा है घर में, and then immediately people have reported him that श्रीवास ठाकुर का बेटा मर गया है. तो तुरंत महाप्रभु ने क्यों नहीं मेरे को बताया, तो महाप्रभु runningly went to that
room, and he said, yeah, this is what I will read it, like, no, what Mahaprabhu, this is the conversation between Mahaprabhu and the son of Srivas Thakur. Yeah, so Mahaprabhu went to his room and he said, yeah, oh my boy, oh my dear boy, why you have leaving the house of Srivas Thakur? Yeah, and the dead body of the son immediately replied, I was living in this house as long as I was destined to live here. Yeah, now that is the time is over. Yeah, so I am going elsewhere according to your direction. Yeah, so वो लोग सब जमा थे, तो डेड बॉडी क्या आंसर देता है महाप्रभु को कि मेरा इतना ही था यहाँ पे रहने का, यहाँ आपके आज्ञा से मैं यहाँ से और एक जगह पे जाऊंगा. एंड आई एम योर इटर्नल सर्वेंट. एंड ये कुकड स्टोरी नहीं है, क्योंकि कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने समझ के ये करके लिखा हुआ है. दिस इज रियली हैपेंड. एंड इट इज नॉट दैट हैपेंड इन 1 lakh year ago. This is happened just 500 years ago. So we should take as it is. And then what he is telling, I am your eternal servant, a dependent living being. I must act only according to the desire of behind. I should act desire as per your desire. I cannot do anything because I have no such power. Hearing this word, the dead son from Srivas Thakur and his family completely they are into transcendental knowledge. उनका जो रोना आ रहा था वो भी रुक गया, तो उनको अंडरस्टैंड हो गया कि महाप्रभु की मर्जी है कि he has taken a birth in this house for some specific reason. तो इसका एग्जैक्टली जो भगवत गीता में श्लोक आता है 2.13 में, देहि न्योस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहम तरत प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते. दिस इज द पर्सन हु इज अ धीरा. कृष्ण कॉन्शियस हमको क्या बनाता है? हमको धीरा बनाता है. इट मेक्स अस टू take all kind of pressure in this material world. This is full dukkhalayam ashashvatam. By doing Krishna consciousness, we can overcome all kind of these miseries. And then Chaitanya Mahaprabhu ने बहुत अच्छा चीज बोला. उन्होंने पूरा उसका क्रिमेशन किया, सब किया. वो करने के बाद, क्योंकि श्रीवास ठाकुर उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने बोला, you have lost one son, but now you have नित्यानंद प्रभु and myself are your eternal son. देखिए कितना महाप्रभु की खुशी के लिए उसने किया. तो महाप्रभु ने बोला, myself and नित्यानंदा are two son of yours. We shall never be able to give up your company. हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे, भगवान आपके साथ में रहेंगे. तो हम कृष्ण कॉन्शियस करेंगे, भगवान से रिलेशन जोड़ेंगे, तो भगवान हमारे साथ हमेशा के लिए रहेंगे. दिस इज द स्टोरीज का जो क्या बोलते हैं, what they say प्रभु, जो सार जो है स्टोरी का है. एंड वेरी क्विकली द सेकंड स्टोरी, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम. इट इज अ, you might have heard this story, but very quickly to repeat, there was a king called Katwang Maharaj. Very powerful, very ferocious, never got defeated. तो इसके लिए वो भगवान देवता लोगों ने क्या किया, देवासुर संग्राम चल रहा था, तो दैत्य को मारने के लिए they selected Katwang Maharaj. They asked him to come to the Swargaloka, and he was fighting with them, like ferociously was fighting, and at the end Daitya has to run away. और वो they got the victory. जैसे ही victory मिला, क्योंकि he was very वो बहुत भक्त था कटवांग महाराज. So what he did, immediately he said, he has asked, because devatas were very happy and they said, ask benediction, हमसे कोई बूंद मांगो, हमसे कोई वर मांगो. तो कटवांग महाराज ने, हम होते तो मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, कुछ और मांगते थे हम लोग, बट कटवांग महाराज ने ऐसा नहीं मांगा. कटवांग बोला, मेरे को मोक्ष दे सकते क्या, कैन यू गिव मी मुमुक्षवा? एंड देवता सेड, वी आवरसेल्फ आर नॉट मुमुक्षवा, वेयर फ्रॉम वेयर वी कैन गिव इट यू. Then you ask something else. Then he said, okay, then if you cannot give mumukshava, तो हमको ये बोलिए कि मेरा जीवन का कितना टाइम शेष बचा है, कितना, how much time I have left to leave this body. That's it, that we can tell. So they immediately inquired Yamaraja. Yamaraja said 2 seconds of the Swargaloka. So it's not 2 seconds of Umar. So then he asked, in 1 second, can you take me to Bhuvar? Why? Because this Bhuvar where we have taken a birth, this is the immigration office. यहाँ पे स्टैम्प मारने के बाद हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं. आध्यात्मिक जगत में, कोई भी जगत में जाना है ऊपर नीचे, तो यहाँ से ही जाना है. So he immediately said, okay, I will take you in 1 second. तो 1 second में उन्होंने उसको अपने घर पे पहुंचाया. He sit in front of his deity and he is continuously in the meditation. So this is how he attained mumukshava. He attained the mukti. So this was the
very true example of Katwang Maharaj, and one is just 500 years ago. I hope this makes clear that mukti giving is only by Krishna, no else. Yeah, and now we'll quickly, before he warned Raghunandan Prabhu, we'll quickly see something, because I promised that we'll go through the purport very quickly. Yeah, so in the purport, Prabhupada is writing, Supreme Personality of Godhead Krishna is the origin person of Vishnu expansion. Yeah, there are two categories, namely integrated plenary portion, separated part and parcel. Yeah, the separated part and parcel are the सर्वेटर. Yeah, जो separated part and parcel है वो जीव तत्व है. Yeah, and जो क्या बोलते हैं integrated plenary portion है वो विष्णु तत्व है. These are the two different तत्व. One is विष्णु तत्व and one is जीव तत्व. और जीव तत्व में ये पूरा देवता जो है वो भी आते हैं. We have 14 planetary system, right from Brahma to Patala, everybody are Jiva Tattva. This is what. So this all Goran, like no, all the ghostly are all coming in this Jiva Tattva. This is what we should understand. Yeah, this is how Prabhupada is explaining. And who comes in the like no, in that he's telling in Jiva Tattva, Kala Bhairava, Samshana Bhairava, Shani Maharaj, yeah, Mahakali, Chandika, all these are in the like no, in the Jiva Tattva. Yeah, this is how we should understand. Yeah, and who is on the Vishnu Tattva? ये बोलते हैं. और जीव तत्व में ऐसे ऐसे देव भी हैं, जैसा ब्रह्मा है, शिवा है, they are all Ganesha, all other demigods are also in a Jiva Tattva. Yeah, so we should worship them to ask what? Krishna Bhakti. Yeah, this is what we should make sure. Yeah, and then who are there in a Vishnu Tattva? Narayana, Damodara, Vamana, Govinda. Yeah, this is what he has taken this name. Yeah, Adokshaja. There are thousands name of Krishna. Yeah, Vishnu Sahasranam. All of them are Vishnu Tattva. They are exactly same power of Krishna. Yeah, but they don't exhibit. They exhibit only what is required. Yeah, and Krishna's to Bhagavan Swayam. It is an expansion of him. This is what Prabhupada is telling here. Yeah, so if someone Prabhupada is very underlining and telling that if someone comparing Vishnu Tattva to Jiva Tattva, he has given one name as per the Shastra called Pashandi. Yeah, Pashandi, I think. Yeah. Pashandi matlab kya hai? We are thinking that my God is equal to Krishna. Yeah, we should not compare this. This is what Prabhupada. And then there was a so ferocious person in the earth was Hiranyakashipu. Yeah, very powerful person. Yeah, and what he did, he used his brain and he worshipped whom? He worshipped Brahma, because he thought Brahma is a creator, so he should have all the power. Yeah, he worshipped him. Like now, how he has worshipped him? Very intensely. Haath upar karke, eyebrow beech mein leke. Yeah, when he was reached the highest of his penances, body mein kuch nahi tha, khali haddi bacha tha, but his heart was beating and he was continuously meditating Om Brahma Devaya Namah. Yeah, so there was too much hot in the upper planet. So सबने जाके बोला ब्रह्म जी जाइए, उसका बाद में देखेंगे, पहला उसका जो तप है वो ब्रेक कीजिए. And he break his tapa, and immediately Hiranyakashipu opened his mouth and he said, "Make me immortal." Yeah? Make me immortal. मैं शरीर में हमेशा रहना चाहता हूँ. ब्रह्मा जी ने बोला मैं खुद immortal नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे immortal बना सकता हूँ. Yeah? Then immediately he has used his brain and he has put all the condition. Yeah? And he has accepted. Yeah? He thought I am now like no Amar. No one can kill me. But then Lord came in a form as a Lord Narsimhadev and he killed him. So that boon was not any of help. Yeah, Lord has accepted all the condition. जो भी condition उसने डाला था सभी को accept करके he has killed Hiranyakashipu. This is how we should understand. We may pray to demigods very intentionally, intense से और भक्ति से कुछ भी करे, but that is a temporary. That is not the permanent. And which is the permanent? Krishna Bhakti is always permanent. This is how we should say. Yeah. So this is the last sentence. I'm going to close here. So the Prabhupada write in the purport, which I like this two sentence. The demigod can award the worship some temporary benefit only, and not the ultimate one. Yeah. It is for this reason only the candidate for the liberation. Yeah. Deliberately reject the worship of demigod. This is the people who are on the star of highest level, they don't worship demigod. But then Prabhupada is writing, although they have no disrespect
of any one of them. Yeah, कोई किसी को हमको disrespect करना नहीं चाहिए. Yeah, by telling this, I will end my Vani here. Thank you so much, Prabhuji, for giving me opportunity. If I say something here and there, it is my agyana, was my limited knowledge. Because of that, I might have said it. Please forgive me. Yeah, and if I say something good, yeah, which will be useful, I will think that I have done some service to my Guru Maharaj and to also my Shiksha Guru and his divine grace Srila Prabhupada and to Krishna. Thank you so much. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, निताय सीतानाथ गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. हरे कृष्णा. एक मिनट मंदिर जी, हम अनाउंस करेंगे. एक बात